Yes, we can start. Yes, Dr. Pooja. Okay, ma'am. So we are starting. So let's start the session by having looked towards certain facts related to NEP 2020, that is National Education Policy. NEP 2020 was released on 29 July 2020, aimed to increase the gross enrollment ratio to 100% in preschool to secondary school level by 2030. Whereas when we talk about higher education, it is 26.3%. And this data was there in 2018 to 50% by year 2035. The first full year after its release has been a mixed bag with respect to the implementation efforts by central government agencies and their autonomous agencies. This year, the year 2021 saw a slew of measures being adopted for the implementation of the NEP with differing result at the early and higher education level. The Department of Education and Literacy of the Education Ministry was quick off the mark to announce a slew of measures to implement NEP 2020. On the other hand, the situation in higher education has evolved at a very slower pace. So to know more about the implementation of the recommended changes or the challenges in the way of implementation of the recommended points in NEP 2020 at higher education level, GD Goenka University, in collaboration with Council for Teacher and Teacher Professional Development, that is CTPD, has organized a panel discussion on the implementation of NEP 2020 in higher education today, that is on 16th April 2023. So I welcome you all and good morning to one and all. We have 4 eminent speakers as our panelists to reflect upon the status of implementation of NEP 2020 in higher education with us in this session. So before going ahead, it is better to know briefly about our respected panelists. So we have Professor Tanya Gupta, Dean School of Education, K.R. Mangalam University, Gurugram. We welcome you, ma'am. And we have Anita Singh, ma'am, Head Department of Education, Saraswati College of Professional Development, Ghaziabad. We welcome you, ma'am. Professor Satyendra Gupta, Dean School of Education, Galgotia University. Welcome to you, sir. Dr. Jugnu Khattar Bhatia, Principal Satyug Darshan Institute of Education and Research, Faridabad. We welcome you, ma'am. So I hereby thank all the panelists for being the part of this panel discussion. And again, I formally welcome you to this session. Now, I would like to invite Dr. Pravesh Lata ma'am, Head School of Education, SOHSC, GD Goenka University, to take over the session. Yes, ma'am. Yes, thank you. Yes, thank you, Dr. Pooja. And I welcome all our eminent panelists. So let us start the session. As we know that new education policy 2020 was launched with a vision of that transforming the education system in India. And this initiative that has been hailed a positive step in the direction of to bring necessary changes in the education system. But before the introduction of this national education policy, Indian education system was governed by, all of you know that 1986 NEP and Right to Education Act of 2009. So this meant was a huge gap between what was needed and what was being delivered. For this very reason itself, this national education policy becomes extremely crucial. And as per the official document of Government of India, the NEP 2020 addresses many concerns which are related to primary, secondary, higher and technical education in the country. So from removing the hard separation between the art and sciences, vocational and educational stream, it also focuses on reforming assessments. And while there are a range of important points that we are discussing today, that is effort to make education more child-centric, more inclusive, more flexible, more comprehensive, and more technology-based, value-based, and multidisciplinary.
So today we focus on child-centric approach of learning and want to empower them by providing them a freedom to select how they want to proceed academically. So with an emphasis on digital and research-based learning, it also pushes toward the global norms. So some features of NEP 2020 that support inclusive education, along with providing the flexibility to fulfill the needs of the diverse student. So, Professor Tanya Gupta, my question goes to you that I want to ask that is NEP 2020 appropriately supporting inclusive education and providing enough flexibility to let students choose their learning pathways and programs? And in addition to this, I also want to know that technology, there is an explosive pace of technological development. You know, artificial intelligence is coming, machine learning, blockchain, smart board, computer devices. And also, I want to know that how is technology supporting inclusion in education at the higher education level? So, Professor Tanya Gupta, I want to know in context of this any inclusive education. Good morning. Thank you, Dr. Parvesh, for giving me an opportunity to be a part of this panel discussion. Very aptly decided theme by GD Goenka University. And I have brilliant co-panelists along with them. So my greetings to all of them. And also to Dr. Pooja, who has been warm enough to introduce us. Coming to the question that you have asked about inclusive education, see, the goal of the national education policy is to create an inclusive knowledge society that values equity and vibrancy. Inclusion is not really a new concept, because if we look into the Universal Declaration of Human Rights of 1948, in that, if you read the declaration, you will see that it very explicitly in Article 26 mentions that education is a human right. So if education is a human right, then there is no question and no context that anyone gets deprived of education at any level. So the NEP 2020 we know is focused. It is based on the global agenda SDG 4, which is primarily focused on ensuring there is inclusive and equitable quality education and providing lifelong opportunities for all. So, when we see a policy, we just read the words and we do not adopt it, we do not implement it in true spirit in our classrooms, in our day-to-day functioning. So inclusion is the heart of the NEP 2020, because the 5 foundational pillars of NEP 2020 are access, equity, quality, affordability, and accountability. Now, when this is the foundation, one of the foundation pillars of having an inclusive education, we cannot question what are the efforts being made by the NEP 2020 for inclusion. So the first thing, see, NEP is a policy which is a guideline, and all policies are guideline. Whether you just referred about the National Policy for Education 1986, then we had the POA 1992, and now we have the NEP 2020. All the policies have been talking of inclusion. It is not a new concept, but somehow our implementation has not been able to reach in terms of the spirit, in terms of our actions, to all those deprived and marginalized sections of the society. And the NEP is once again reiterating and emphasizing on providing inclusive education to them. So, Chapter 6 of the NEP 2020 is primarily, if one reads the policy, Chapter 6 is focused on equity and inclusion and learning for all.
And chapter 14 is on equity and inclusion in higher education. Now, what has the NEP, given? It came in 2020, and now we are in 2023. So a lot of efforts are being made. If we see the implementation of the Samagra Shiksha 2.0, we see the kind of initiatives and implementation reports of the NEP that are coming after 2 years and 3 years, we will see that a lot of initiatives have been made for for operationalization of inclusivity in the education system. Now, one very major important aspect is focus on the socio-economic disadvantaged groups. There is a reference of these groups in the NEP 2020, where NEP identifies that there is a need, particularly a need to reduce disparities in education, the gaps in education, which are so evident based on the socio-cultural identities like the scheduled castes, the scheduled tribes, the other backward categories, and the minorities. Also based on geographical identities, such as children from villages, from small towns, and also from aspirational districts. That is, those districts which want to get education, but due to certain limiting factors, they are not getting those facilities. So those are aspirational districts. Then the NEP is also focused on the education of the girls and the women and the transgenders. This is first time a policy which talks of education for the transgenders. And it also talks about education for children who are differently abled. So all these are the efforts of the NEP. But now we have to see how we make a culturally responsive curriculum, our pedagogy, our infrastructure, our assessment processes, how we are going to now create an environment and ecosystem which is going to provide all our learners the opportunity to education. To the second part of what you said is the technology, the role of the technology. So there are initiatives that have been made because we are talking of learning for all, and we are talking of lifelong learning. Therefore, we cannot only stick to a formal education system. And therefore, technology has a big role in supporting inclusion. And very explicitly, the NEP 2020 talks about an autonomous body, which is the National Education Technology Forum, which will provide a platform for free exchange of ideas and utilization of technology to reinforce learning, assessments, planning, and administration in education. So there are certain initiatives, and these are in process, like a lot of pilot studies being conducted on online education by NIOS, CIT, IGNOU, providing digital infrastructure, providing access to online teaching platforms and tools. We have heard about Swayam and Diksha. So these are all implemented. Then content creation, digital repositories. So we see there is a lot of course creation through MOOC and through the National Digital Library. There is a lot of focus on addressing to the digital divide. That is, it is an effort, the government is making effort that whatever content is developed digitally is available in all Indian languages, so that medium of instruction doesn't become a limiting factor for the students to learn. Then establishment of virtual labs. This is also one initiative that has been taken. And most important is that all these digital technologies and infrastructure and the pedagogy cannot be adopted if the teachers are not well trained. Therefore, there is an effort, and there needs to be more effort to train teachers
into use of digital infrastructure and digital pedagogy, and even digital assessments. So such kind of training programs are important. And we know the NEP focuses on blended model of learning, both synchronous and asynchronous. So yes, these are few initiatives. I think that technology has a big role to play in creating an inclusive and a vibrant society. Yeah. Yes, sure, ma'am. And really, there is an explosive pace of technological development, and no doubt it is certain that technology will impact education in multiple ways, and some of which can be foreseen at the present time. Thank you, Professor Tanya Gupta, on deliberating on our questions that we want to know about the inclusive education, because uh, technology development and for the inclusive, like suppose there are many groups in the inclusive education and you want to teach them through the technology, and this is a major challenge to develop the material for these students, and NEP is having the focus on this. So moving ahead, thank you, Professor Tanya. This is India's third policy which replaces the 1986 NEP, and according to the government, NEP 2020 is formulated after having considered over 2 lakh suggestions from different levels of local self bodies. There is a data that 2.5 lakh gram panchayat, 6,600 blocks are there, and 676 districts, with the aim of holistic productivity and contributing citizen for building an equitable, inclusive, and plural society, which is within increased gross enrollment ratio, that is GER of 50% by 2035. So national education policy has conveyed a structural change in the education system, which intended to make India the global knowledge superpower, ensuring equity and inclusion. So for equity and inclusion, realization of diverse need of the population is required. So according to the current status, now my question goes to Dr. Anita Singh. Can we say that the implementation of NEP 2020 at higher education is catering to the needs of our diverse population? First of all, my greetings to everyone in this webinar. And I would like to express my gratitude to Goenka University for inviting me as a panelist in this program. Now coming to my question, I'll repeat the question. Can we say that the implementation of NEP 2020 at higher education is catering to the needs of diverse population? Yes, Here the word diverse population is very important, and let us understand what it means by diverse population first. See, diversity of population in India, if we take it from that perspective, it means a range of people with various racial, ethnic, social, economic, and cultural background. All these people having different lifestyles, experience, and interest. If I say in short, they are a group of people living in the same place, but they are all different from each other. So we have to cater to diverse learning. Now, what does diverse learning mean? As Professor Tanya just mentioned, gender identities have changed in the year 2020, and we have to cater to gender identities. Racial minorities, which are many in our country, we have to cater to learning for those people. Then there are people who are socioeconomically disadvantaged as compared to others. So our education should cater to them also. There are some who are advantageous. There are some learners who are not so successful at the school level. There are many dropouts at the school level. We have to cater to them also. Then we have to cater to as Dr. Tanya said, inclusive education, which includes all the diverse population of the country. Now let us identify the essential points that we need to take care to teach the diverse learners. So what we need here is, if we understand the diverse learning, then we need to have active learning modules. If we have active learning, then we can encourage the diverse learners. Secondly,
We have to promote self-learning techniques, that is project-based, theme-based, learning by doing, experiential learning. All this should be included into our curriculum. Only then we can cater to the diverse learners. Then talking about a testing system. Earlier, our testing system was more or less examination based. But when we talk about diverse learners, we need to have a pattern of testing which have alternative proportions and alternative methods by which we can test the learner. No one test is applicable to all. So this is what we have to incorporate. And lastly, because we are living in a challenging world, we need to, incorporate educational technology and also take in new learning tools. Every year we find a lot of new learning tools are coming up, and we need to meet up that challenge, and we need to train everyone on those tools. Now, India is a country which has 22 major languages and around more than 200 mother tongues. So this clearly demonstrates the kind of diversity and the language and culture that we have. So when this policy was being framed, NEP 2020, all this was taken into account, and it was you can understand it was a manhood task for the NEP department to come up with a policy which could cater to all these sections of the society. So let me now come to NEP, what NEP has done. NEP has, this policy has completely revised. It has completely revamped all the aspect of the education structure, including regulation as well as governance. And it has created a completely new system. That, of course, we all know. Now, coming to the main 5 pillars of NEP 2020, let us take them one by one. First, they talk about SS. Education should be accessible to one and all. That's a very important factor. Only then we can cater to diverse need. That means anybody sitting anywhere in the country should be able to educate themselves. So that is what NEP is planning to do. Second is equity. Education should be equal to all. No matter what caste, creed they are, they will be able to educate their children, or they will be able to educate themselves. That is the second pillar of NEP. Third, stress is on quality. We have to provide quality education in whichever sector we are providing education, in whichever state we are providing education. We have to provide quality education even right up to the rural baseline. Then comes the problem of affordability. Education should be such to cater to diverse needs that it should be affordable. Everyone should be able to afford that education and educate themselves. And lastly comes accountability. Accountability of education lies in our hands. All our panelists that we are talking and all the audience that are there, accountability we will determine. So we need to be well-trained. We need to be updated. We should know what is required and accordingly train our diverse population. So if we take into account the 5 pillars of NEP, then of course, if we just have gone through them, that means whatever policy has been designed, that definitely caters to the diverse population. Now, coming to the part of higher education, let me first go down to the school education, because see, when we'll cater to diverse population, only gradually it will sleep into higher education, the policy. Now, what the school education is defined by the NEP is that the objective is to make the education universally accessible right from primary to secondary level. And by 2030, we plan to have 100% gross enrollment ratio at the school level. Let me repeat, 100% gross level enrollment. That is, in the next 10 years, everybody would be into the school streamline. No child will be outside the school. So if we are able to achieve that, then, and definitely that in the higher education level also, that ratio will definitely increase. Now, what they have done to achieve this 100% gross enrollment, they have divided
the school education into 4 stages. That is 5 plus 3 plus 3 plus 4. I think everyone is aware of this factor, that they've divided in that fashion. Now, how they have made this division, that is very important, and that we have to understand. What they have done is at the 5+ years level, that is, they have called it the foundation stage, wherein they are using the mother tongue. When you are using the mother tongue, when the children have the option to use the mother tongue, naturally the education will reach to the grassroots level. I must give here the example of, say, the tribal, the tribal people are the most deprived people regarding education in our country. And it has been seen that, say, for example, 100 students enroll, 40% dropout rate is seen at that level. But when the learning will be in the mother tongue, and it will be right at the foundation stage. Foundation stage is the pre-primary stage of 3 years, class 1 and class 2. Now here, the main focus of the NEP is on literacy and numeracy. They are going to develop these 2 factors in the children. It will be more or less playway and activity based. All schools will have the pre-primary section wherever they are, whether in the rural area or the countryside area, everyone will have it. Then will come the preparatory stage, that is the for 3 years, and that will be up to class 3. And that will be having playway, discovery, activity-based method, and interactive learning that we talked about in the very beginning, that we need to inculcate active learning among the learners if we have to cater to the diverse population. Then will come the middle stage, wherein they will learn the other subject for the 3 years, be it science, maths, arts, humanities, in the form of experiential learning. And last would be the secondary stage, which would be multidisciplinary. So when we will cater to these 4 stages properly, obviously it will be catering to the diverse population. Now coming to the higher education part, I think Pooja just mentioned the percentage that till now we were catering to about, less percentage, and we would be catering to 50%. We'll be reaching 50% stage of giving higher education to the students in this country by the year 2035. So if our school education system goes well, this is the target that we planned to achieve by then, by 2035. Now, what is the government doing regarding this? The government says that we aim to increase the state expenditure. Because see, if you're going to make the education affordable, you have to provide, the government has to provide funds. So they aim to increase the state expenditure on education from 3% to 6%. Now, all this would result in 100% youth and adult literacy for the diverse population. So here, thereby, the NEP is ensuring that we will have an India-centric education system that will provide high quality education to all, thereby bringing about a transformation in the Indian education system by 2040. That is the aim of the system here that they are planning to do. Now, I'll just give you an example of the implementation of one of the courses that has already started as far as 2020 is concerned. Now, if you take one of the UG courses, what the government has done, they have introduced the semester system, I think, which we all of us are running in our colleges. So instead of the 3 years UG program, they have broken it down to 6 semester system. Now, this semester system, the subject selection is multidisciplinary approach has been taken. If a student is from commerce section, he can very well take on other subjects too for his learning. Now you have here the, the major subjects, the minor elective subjects, then you have other minor subjects like the co-curricular activities, and you also have the other value-based, system. We also have in the final year, the research-based program,
the training or internship program, which is a mandatory factor now, even in the UG factor. It is not a learning which is just the old system wherein they were just learning theory. Even the accrediting system that is there, they have adopted the ABC system, which means the academic bank credits. The student can, get his credits for different subjects, and he can very well get through the examination and go to the next year. Now, there's a flexibility here, even in the way the student will get educated. Flexibility here means if a child goes through the college for the first year and he does not want to continue in the second year, he gets a certification. If he continues for the second year, he gets a diploma. And in the third year, he gets a degree. And all this becomes his bank credit in the form of a digital locker, you can say. And this is how they have changed the complete system. So therefore, we can very well say that the system is definitely catering to the diverse need of the population. But now we have to see how the implementation is going on. The implementation also should go as per the plan. Training of the faculties and the people in the education field also should be planned properly, because in certain areas we find there's a lot of confusion. We have to go back, talk to the higher people, and sometimes even they are not aware of what is happening. So there is where we are slightly lacking, and we need to upgrade that. If we can do this, then we will be able to implement this policy in a better manner. Yes, thank you, Dr. Anita. And you have very logically explained that how this NEP 2020 is going to cater the diverse population. And in continuation of the session, now I would like to over the session to Dr. Sanjay to lead the session. Thank you, Dr. Anita. Thank you, Pravesh ma'am. Good Yes. evening, good morning to all. मेरा जो क्वेश्चन है वो सत्येंद्र सर से है और बड़ा ग्राउंड रियलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये कि अभी अगर हम देखें तो नेशनल लेवल की प्रॉब्लम है कि आज के जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो क्लासेस अटेंड नहीं करना चाहते. उसके बाद भी मैं एनईपी की बात करूं, मतलब ये कश्मीर से लेकर और केरला तक, कन्याकुमारी तक देखें, सभी जगह ग्रेजुएशन का यही हाल है. एनईपी में 4 ईयर डिग्री कोर्स की बात की है उन्होंने. तो सत्येंद्र सर से मेरा क्वेश्चन ये है कि 4 डिग्री कोर्स किस तरह से बेनिफिट पहुंचाने वाला है, क्योंकि 2 चीजें हैं कि स्टूडेंट्स क्लासेस अटेंड नहीं करना चाहते, जबकि एक नेशनल प्रॉब्लम है. दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, जिसपे कोविड के बाद तो काफी अच्छा फोकस है. और मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि शायद कुछ कोर्सेज में ऐसा हो जाए कि 2 डेज डिस्कशन क्लासेस हों, बाकी एनी टाइम और फ्रॉम एनीवेयर वाले कॉन्सेप्ट पर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके कुछ क्लासेस ऐसी हो जाएं कि जो ड्यूरेशन ऑफ द कॉलेज है किसी भी स्टूडेंट का, जो वो स्पेंड करता है टाइम, शायद उसमें कोई कमी आ जाए, रिसोर्सेज को और अच्छे तरीके से हम किसी दूसरी चीज में यूज कर सकें. लेकिन ऐसा कुछ ग्राउंड पर तो नजर आता नहीं. अभी 2 इयर्स तो हो गए जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एनईपी कोर्स को, और 4 इयर्स की डिग्री की भी बात कर रहे हैं. तो जब ये 4 इयर्स की डिग्री की बात करते हैं तो फिर करते हैं कि पीजी कोर्स 1 ईयर का हो जाएगा या कभी कभी डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं. तो सिंपल मैथमेटिक्स का सा यूज पॉलिसी में नजर आता है मुझे. तो ग्राउंड पर इसका बेनिफिट कैसे होने वाला है, और जो ऑलरेडी 3 इयर्स का डिग्री कोर्स चल रहा है, क्या वो एज इट इज रहेगा इसका पार्ट, या कुछ बाद में इसको टर्मिनेट या डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा? सत्येंद्र सर. प्रणाम सर, नमस्कार. Thank you, GT Goenka University, for conducting this panel discussion. And definitely, Sanjay sir, the questions which you are having are very relevant, and there are so many questions in our mind. I hope we are having the participants from the North India only. तो संजय जी, आपने जो प्रश्न किए हैं, और अभी जो मैं बात करूंगा कि जुलाई 2020 में एनईपी का डॉक्यूमेंट लॉन्च हुआ है, और दिस इज द विजन डॉक्यूमेंट. गाइडलाइंस आर देयर कि व्हाट वी वांट और व्हाट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वी वांट टू फ्लोट इन आवर कंट्री.
So the every governing body is working in that area, or I just want to focus your attention. एक डॉक्यूमेंट यूजीसी की तरफ से रिलीज हुआ था दिसंबर 2022 में, यानी आज से 4 महीने पहले, और दूसरा डॉक्यूमेंट अभी उनका आया है 10th of April, जिसका कि उन्होंने नाम दिया नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF। तो जो दिसंबर में आया था, दिसंबर 22 में, उसको उन्होंने स्पेसिफाई किया था ओनली रिलेटेड टू द अंडर ग्रेजुएट करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बाय द यूजीसी। ये यूजीसी की डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। अदर बॉडीज के चूंकि सारा कॉम्प्रिहेंसिव चल रहा है और हायर एजुकेशन की हम बात कर रहे थे, यूजीसी इज द गवर्निंग बॉडी इन द कंट्री। तो इस दिसंबर 2022 के डॉक्यूमेंट में उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि हाउ वी विल मूव अवर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, और जिसमें कि आपके क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स इसमें मिल जाएंगे रिगार्डिंग द ग्रेजुएशन प्रोग्राम फ्रॉम 1 year, 2 year, 3 year एंड 4 year। और दूसरा उसी का एक्सपेंडेड फॉर्म आया है, और जो हम कह सकते हैं कि चूंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट का फोकस है टू गिव द क्रेडिट। यदि आप अपनी पढ़ाई पूरी करते देन यू विल बी गेन द क्रेडिट। तो क्रेडिट कैसे बनेंगे, क्रेडिट का सिस्टम क्या रहेगा, और उसको बहुत कुछ वी कैन से कि दे आर ट्राइंग टू यूनिफॉर्म इट। एक फॉर एग्जांपल मैं एक बात कहूंगा, जैसे कि अभी हम लोग जो यूनिवर्सिटी सिस्टम में है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रेडिट। यदि आप एक कोर्स पढ़िए, इतने घंटे पढ़िए, तो आपको एक क्रेडिट मिलता है आप इफ यू पास द कोर्स एग्जामिनेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप मेजरली जो देखा है हमने, या AICT का हो या इंजीनियरिंग का जो चलता है सिस्टम, तो उसमें पैटर्न है कि आप एक पीरियड हफ्ते में, मतलब एक कोर्स आपने लिया है तो उसके हफ्ते में आप 3 क्लासेस पढ़ेंगे, 3 क्लासेस पर वीक फॉर द होल सेमेस्टर। अब सेमेस्टर की लेंथ क्या होगी, सेमेस्टर की लेंथ कहीं 13 वीक्स है, कहीं 14 वीक्स है, कहीं 15 वीक्स है, कहीं 16 वीक्स है। तो अभी वीक को भी उन्होंने डिफाइन किया है और क्रेडिट को डिफाइन किया है। तो आप यदि 3 क्लासेस पर वीक पढ़ते हैं तो भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा यदि आप कोर्स पास कर लेते हैं। कहीं 4 क्रेडिट्स की बात थी, मतलब आप 4 पीरियड पढ़िए पर वीक, तब आपको एक क्रेडिट मिलेगा। कहीं 5 क्लासेस पर वीक पढ़ी, तब आपको एक क्रेडिट मिलेगा। तो ये जो डिफरेंसेस थे, वेराइटीज थी इन द स्टडी आवर्स, उसको भी उन्होंने इस क्रेडिट फ्रेमवर्क में यूनिफॉर्म करने की कोशिश की है, और इसको उन्होंने डिफाइन किया है 15 क्रेडिट्स आपको मिलेंगे जब आप 5 पीरियड पर वीक आप पढ़ेंगे फॉर द 15 वीक्स। तो इस तरह से उन्होंने सेमेस्टर डिफाइन करने की कोशिश की है। तो यहाँ जो पहले जो सेकंड क्वेश्चन था उसके मैं आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि अभी जो ग्रेजुएशन 3 years का था क्या वो खत्म हो जाएगा। तो अभी आप देखेंगे, और इट इज टू अर्ली, अभी 2 ही साल हुए हैं, और अभी तो इन्होंने अपने आप ही 2030 तक का टाइम लिया हुआ है, और 30 को 35 भी एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की कोशिश है कि पूरी कंट्री के ऑल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और सारी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, IITs, IIMs, सबको उसमें यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं। और ये तो हम जानते हैं कि अपना ह्यूमन नेचर है कि जो भी चेंज होगा फर्स्ट वी विल रजिस्ट, ये शुड नॉट बी डन। पुराने में क्या बुराई थी जो आप नए को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस तो रहेगा और बहुत हाई होता रेजिस्टेंस। तो धीरे धीरे मेंटली आपको प्रिपेयर करना होता है कि व्हाई वी आर ब्रिंगिंग दिस चेंज इन द सिस्टम, और पूरी कंट्री का यूनिफॉर्म पैटर्न बनाने के लिए, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए इन द एजुकेशन। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू वर्क इन द फॉर्म ऑफ with the help of the UGC, AICT, NCRT, even मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आप जब पढ़ेंगे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट जो अभी आया है 10th April में, तो उसमें देखिए हाई पावर कमेटी बनाई थी, तो उसमें NIOS के रिप्रेजेंटेटिव थे, NCRT का रिप्रेजेंटेटिव है, एजुकेशन बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव, सभी को रखा था उन्होंने, और सबकी हेल्प से पूरे स्टूडेंट्स की लाइफ, इवन जब आप जैसे ही बच्चा पढ़ना शुरू करेगा फ्रॉम द नर्सरी और टिल द PhD प्रोग्राम विच इज द हाईएस्ट डिग्री इन द एजुकेशन, वहां तक आपकी पूरी लाइफ के क्रेडिट कैसे डिफाइन होंगे, हर स्टेज पे आपको कितने कितने क्रेडिट मिलेंगे, और वो क्रेडिट कैसे ट्रांसफर होंगे। जब उसको आप थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे देन यू विल फाइंड दैट कि इट इज टॉकिंग अबाउट द ग्रेजुएशन प्रोग्राम।
तो वहां उन्होंने 4 साल के ही ग्रेजुएशन प्रोग्राम की बात की है। तो 3 ईयर का सिस्टम नहीं रहेगा, आप देखेंगे, बट स्टूडेंट्स विल हैव द चॉइस इफ यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम द सिस्टम ऑफ ग्रेजुएशन आफ्टर 1 ईयर ऑफ स्टडी। आप पढ़ाई पूरी करनी होगी, आप ये नहीं कहेंगे मैं फर्स्ट ईयर फेल हूं, आपको कहना होगा फर्स्ट ईयर पास है। आप फर्स्ट ईयर पास करने के बाद आप सेकेंडरी में पढ़ना नहीं चाहते हैं, सो देन यू विल गेट द सर्टिफिकेट इन दैट पर्टिकुलर डोमेन जिसमें आपने एडमिशन लिया था। आप 2 साल की ग्रेजुएशन पढ़ के किसी कारण से आगे की स्टडी कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे, तो आपको पहले पास करना होगा उसको, देन यू विल गेट द डिप्लोमा इन दैट स्ट्रीम जिसमें भी आपने एडमिशन लिया था। आफ्टर 3rd ईयर, इफ यू वांट टू डिसकंटिन्यू your education in the graduation at the graduation level, so then you will be allowed। तो आप 3 साल के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी इन दैट स्पेसिफिक एरिया जो अभी आपको मिलती है। जैसा अभी हमें 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद आपको डिग्री मिलती है, वैसे ही तब भी नए सिस्टम के अकॉर्डिंग एज पर द NEP आपको डिग्री मिलेगी। अब यहाँ से 4th ईयर में जब आप मूव करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट ये कह रहा है एट द 4th ईयर you will have the choice, or there will be 2 options based upon your performance. Till 3rd year, if you are able to maintain the 7.5 CGPA in the form of CGP, if we are talking, so 7.5 इसको आप परसेंटेज में इक्विवेलेंट कर लेंगे तो 75%. So then those students, those who are having the CGPA more than 77.5 or having the percentage wise marks more than 75%, they will have the 2 choice, whether you want to go for the research or just you want to complete your 4th year with extra learning about the subject or courses। तो 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे यदि आप 7.5 से अबव जाते हैं। तो यदि आप 7.5 अबव के हैं तो 2 चॉइस रहेगी। तो पहली चॉइस है कि आप रिसर्च में जाएंगे क्या, तो आपको अगला जो 4th साल है आपके ग्रेजुएशन का, उसमें आपको रिसर्च स्पेसिफिक एक्टिविटीज करनी होंगी, उसमें आपको अपना डिसर्टेशन वगैरह कंप्लीट करना होगा और कुछ बेसिक कोर्सेज उन्होंने डिजाइन किए वो आपको पढ़ने हैं और उसको सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर लेंगे, देन यू विल गेट द डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च। और यदि आपके 7.5 से कम है और या आपने चूज किया कि नहीं मुझे रिसर्च में नहीं जाना, मुझे तो केवल एक्स्ट्रा लर्निंग करनी है अबाउट द कोर्स, तो वो भी आप कर लेंगे। 4था साल जब आप पूरा करेंगे, एग्जाम सक्सेसफुली पास कर लेंगे, देन यू विल गेट द डिग्री विद ऑनर्स। तो थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। जब आप 3rd ईयर कर लेंगे देन यू विल गेट द डिग्री। सपोज करो यू आर डूइंग द BSc, तो देन BSc आपको मिलेगा केवल। यदि आप BSc करते हैं विद एक्स्ट्रा सब्जेक्ट स्टडिंग तो आपको मिलेगा BSc विद ऑनर्स। लेकिन यदि आप रिसर्च मोड लेके जाएंगे तो आपको मिलेगी BSc ऑनर्स प्लस रिसर्च। BSc ऑनर्स एंड रिसर्च आपके उस पर लिखा रहेगा डिग्री के ऊपर, आपके ग्रेड कार्ड के ऊपर कि ही और शी सक्सेसफुली कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन विद ऑनर्स एंड रिसर्च। तो आप ये मान के चलिए आपको 3 तरह की डिग्री के ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। अभी आपके पास में केवल एक ही ऑप्शन है कि सिंपली आपको पास की डिग्री मिलती है या ऑनर्स की डिग्री मिलती है। यहाँ पर आपको एक तीसरी डिग्री और मिलेगी जो कि आपको विद रिसर्च करके मिलेगी। अब मुझे लगता है कि मुझे रिसर्च करने से कुछ फायदा होगा, मुझे बाद में इंडस्ट्री में काम करने से कुछ एडवांटेज मिलेगा, या मैं हायर लेवल पे मास्टर्स और PhD लेवल पे मेरा रिसर्च करने का मन है, सो देन यहाँ से आपकी एक लाइन खुल जाती है। देन यू विल हैव द एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड एंड द नॉलेज एंड स्किलिंग अबाउट द रिसर्च। और इस सभी की कोशिश भी है, सारे शिक्षाविदों के प्रयास भी है कि हमारे देश में रिसर्च पर काम होना चाहिए। तो रिसर्च एटीट्यूड कैसे डेवलप होगा, हाउ वी कैन प्रमोट द लर्निंग अबाउट द रिसर्च, तो वहां एक वो ऑप्शन दे रहे हैं कि आप रिसर्च में आ जाइए। और आपका रिसर्च में मन नहीं है, आपका मन नहीं करता है मुझे रिसर्च में नहीं जाना, आई हैव नो इंटरेस्ट इन रिसर्च एरिया, बस मुझे 4th ईयर की डिग्री पूरी करनी है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट वहां पर आपको सेम क्रेडिट नंबर विल बी सेम, क्रेडिट में कोई चेंज नहीं है, सिंपली वहां पर आपको दूसरे कोर्सेज पढ़ने होंगे, अपने ही कोर्स जो आपने अभी तक पढ़े हैं 1st ईयर 2nd ईयर 3rd से एडवांस लेवल पर और कोर्स आप पढ़ेंगे थियोरेटिकल।
और आप सिंपली ऑनर्स डिग्री लेके जा सकते हैं। तो ये तो एक क्वेश्चन का आंसर है जो मैं यहाँ पर दे पाऊंगा बेस्ड अपॉन द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जो कि आपका अप्रैल 2023 में रिलीज हुआ है। और यही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने दिसंबर 22 के डॉक्यूमेंट को रेफर किया है फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। वहाँ दोनों में यही बातें वहां पर लिखी हैं। अब बात आती है इसी डॉक्यूमेंट को जब आप देखेंगे, मैंने उसका ऐसे स्क्रीनशॉट लिया है, मैं अभी कोशिश करता हूँ शेयर हो जाए आपके साथ में। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए जरा, मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आई होप स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को। Yes, sir. It is visible. Yes, sir. अब आप यहाँ देखिए, चूंकि इसको मैंने स्क्रीन करके जूम के थोड़ा सा फॉन्ट हो सकता है थोड़े से फेड हो गए हों। आप सबसे बॉटम लाइन पर आइए, सबसे नीचे, और जब डॉक्यूमेंट आप रीड करेंगे देन यू विल फाइंड एट द पेज नंबर 44। आपको ये साइड में दिखलाई दे रहा है। पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है और पूरे में क्रेडिट कैसे चलेगा, क्या चलेगा, सब इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ आप देखेंगे तो सबसे नीचे इन्होंने स्कूलिंग से शुरुआत की है, स्कूल लेवल से शुरुआत हो रही है इसकी। 5 ईयर फाउंडेशनल। अब ये जो अभी इम्प्लीमेंट होना है बहुत सी बातें, तो आप सबसे मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा, फोकस करूंगा। यू जस्ट सी द फर्स्ट कॉलम एट द बॉटम, 5 ईयर फाउंडेशनल, और नीचे देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, 800 आवर्स पर ईयर। तो यहाँ इन्होंने डिफाइन, इवन स्टडी आवर्स भी डिफाइन किए हुए हैं कि आप जब क्लास में बैठ के पढ़ेंगे तो आप बच्चे को पर हर साल कम से कम 800 घंटे क्लास के अंदर पढ़ना होगा। एक्स्ट्रा लर्निंग, सेल्फ स्टडीज वो इसके बाहर है। देन 5 इयर्स हो गए, जो हमें पता है कि एनईपी ने रिकमेंड किया है कि अब हम प्री स्कूलिंग, जो भी आज हमारे प्री स्कूलिंग कहलाता है, वहां से लेके क्लास 2 तक हम लेके चलेंगे। तो 3 + 2 5 इयर्स हो जाएंगे, और जिसमें आंगनवाड़ी वाला पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। सो देन 5 ईयर फाउंडेशनल जब बच्चा पूरा कर लेगा, अब आप कॉलम को थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो सबसे ऊपर जो लिखा है क्रेडिट अर्नड, एंड सेकेंड लास्ट कॉलम इज टॉकिंग अबाउट क्रेडिट पॉइंट्स अर्नड। तो आपको 5 साल पूरे करने पे 5.4 क्रेडिट पॉइंट्स आपको अर्न हो जाएंगे, और क्रेडिट आपको टोटल 27 मिलेंगे, वो 5 साल में मिलेंगे, डिटेल दिया हुआ है। और आप जब क्लास 2 पूरी कर लेंगे तो देन यू विल गेट द क्रेडिट 10.8। अब उसके बाद आप आएंगे क्लास 3, 4 एंड 5 में, तो रेड लाइन डॉटेड 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 करके उन्होंने डिफाइन किया इसको। तो ये 12th लेवल। उसके बाद आप देखिए 3 ईयर मिडिल क्लास, क्लास 6, 7 एंड 8, उसके क्रेडिट डिटेल वगैरह उन्होंने पूरे यहाँ पर दिए हुए हैं। देन वी मूव टू द क्लास 9th एंड 10th। तो 9th और 10th में भी उन्होंने डिटेल दिया है कि कितने घंटे आपकी पढ़ाई होगी, कैसे कैसे आपका वो चलेगा। और अब आपको कुछ ऐसा पता है कि आफ्टर 8th क्लास वी कैन मूव टू द वोकेशनल। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश की इन्होंने कि सिंपल स्टडी आप करते हैं और यू मूव टू द वोकेशनल एजुकेशन। तो दोनों इसलिए उन्होंने ऑब्लिक ऑब्लिक करके बोर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं। और यहाँ 3rd कॉलम में आप देखेंगे तो कई सारे शब्द लिखे, आप पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको कुछ कुछ पिक्चर्स क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। देन क्लास 11th एंड 12th, सेकेंड ईयर सीनियर से, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी कहते हैं इस समय, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कितने क्रेडिट मिलेंगे, ये सब इन्होंने दिया हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन संजय जी का अंडर ग्रेजुएट से था तो मैं उस पर फोकस करूंगा। नाउ यू सी जो लाइट ग्रीन कलर में है उसमें देखिए क्या साफ साफ लिखा है, 4 ईयर यूजी विद ऑनर्स ऑनर्स विद रिसर्च BE बीटेक और 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट। तो आप BE बीटेक भी आप करते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूडेड हो गया है। सिंपल आप ग्रेजुएशन करते हैं किसी भी इस स्ट्रीम में, वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया है इन्होंने। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि आप 3 साल का ग्रेजुएशन करें चाहे आप 4 साल का करें, दोनों सिस्टम हमारे चलते रहेंगे। और उसमें जैसे जैसे आप एग्जिट करते जाएंगे तो आप लास्ट कॉलम में देखिए यूजी सर्टिफिकेट, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा जब आप फर्स्ट ईयर पास करके छोड़ देंगे। जब आप सेकेंड ईयर पास करके निकलेंगे बाहर, देन यू विल गेट द यूजी डिप्लोमा।
और जब आप थर्ड ईयर पास करके निकलेंगे देन यू विल गेट द डिग्री ऑफ अंडर ग्रेजुएट और बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन और द बीएससी इंजीनियरिंग। हमें पता है कि इंजीनियरिंग में भी दो तरह की डिग्री चलती है, एक बीएससी की डिग्री चलती है और एक बी और बीटेक। सो देन यू विल गेट द बीएससी इंजीनियरिंग। ऑलरेडी 3 years बीएससी इंजीनियरिंग इस समय हमारे देश में चल रही है। एंड व्हेन you will complete your 4th year with 2 options, whether you are going with the honors degree only or you are going with the honors with research. So then you will get the degree after completion of the 4th year of graduation, UG degree honors oblique। अब देखिए संजय जी, एक दूसरा प्रश्न था आपका, क्या हमारे पीजी का क्या होगा? So then you will see here पीजी डिप्लोमा। यदि आप 4th ईयर करके बाहर जा रहे हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का डिप्लोमा भी यहाँ पर आपको मिलेगा। देन बीटेक एंड बी, तो 4 साल का बी आप पूरा करते हैं, 4 साल का बीटेक आप पूरा करते हैं तो आपको वहां पर बीटेक की डिग्री मिलेगी। यहाँ पर यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं सिंपली बीए, बीएससी, बीकॉम के फॉर्म में, यदि ट्रेडिशनल से मैं कंपेयर करूं नहीं तो फोर्थ ईयर करने पे 2 डिग्रियां मिलेंगी, मतलब पीजी डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन? नहीं, पहली डिग्री तो मिलेगी आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री विद ऑनर्स और अंडर ग्रेजुएट डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च। ठीक है, मिलेगा आपको। हाँ जी। क्योंकि आप 4 साल पूरा कर लेते हैं तो जी। अब देखिए पीजी में भी वहां पर 2 ऑप्शन है। अब आप फर्स्ट कॉलम में फिर ध्यान दीजिए, पीजी डिग्री इन ब्रैकेट 1/2 years। इसका मतलब क्या है, पीजी डिग्री में भी 2 ऑप्शन रहेंगे, आप 1 साल का पीजी करके चले जाइए बाहर या 2 साल का पीजी पूरा करिए। तो नेचुरली जो बीएससी 3 ईयर करके जाएंगे वो मास्टर्स में जाएंगे तो उनको 2 साल का मास्टर करना होगा। जो 4 साल का ग्रेजुएशन करके जाएंगे उनको 1 साल का मास्टर करना होगा। वो डिटेल इसके अंदर जो अभी वर्डिंग्स है उसको हम पढ़ के जो समझ सकते हैं। तो पीजी डिग्री ब्रैकेट में 1/2 years ME/MTech। अब जैसे आजकल ME MTech अभी हमारे देश में 2 साल का ही है, लेकिन यूएसए का सुनते हैं 1 year का ही होता है। तो ये जो कि पूरे विश्व में क्या चल रहा है उसके अनुसार भी अपनी शिक्षा व्यवस्था के स्ट्रक्चर को बदलने का प्रयास, या कह सकते हैं कि ट्यूनिंग विद द होल वर्ल्ड, स्पेशली द यूरोपियन कंट्रीज एंड द अमेरिकन, तो उससे भी ट्यून करने की कोशिश यहाँ पर की है। अब आप यहाँ देखिए इसी पीजी के पहले वाले रो में नीचे जो है पीजी 2nd year और पीजी 1st year इंजीनियरिंग, उसमें क्या कंडीशंस रहेंगी वो वहां लिखा है उन्होंने। और इसको थोड़ा सा जब आपको और डिटेल में समझना है तो आपको इसी डॉक्यूमेंट को और डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तो इसमें और भी पेजेस हैं। पेज नंबर 104 पे आप जाएंगे इसमें डॉक्यूमेंट में, तो वहां आपको पूरा डिटेल दिया है कि व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एंटरिंग दिस लेवल। तो वहां डिटेल में आपको ये बातें और देखने को डॉक्यूमेंट सर उसके लिए हम शेयर कर देंगे इसको, डॉक्यूमेंट को ना, डिटेल वाला डॉक्यूमेंट ऑलरेडी शेयर है अपने ग्रुप में और आप जी। यहाँ भी शेयर कर सकते हैं। जी जी। और लास्ट में देखिए पीएचडी डिग्री। सो लास्ट अबव हाईएस्ट डिग्री इज द डॉक्टरल डिग्री पीएचडी, और वहां भी क्रेडिट वगैरह की बात उन्होंने की हुई है। सो आप चाहे पीजी आप 1 year का करें, 2 year का करें, जो भी मिनिमम ड्यूरेशन आप कंप्लीट कर लेंगे ओनली देन यू विल बी अलाउड टू एंटर इन द पीएचडी। अभी एक जो बीच में बात आई थी कहीं सुनने में कि यदि आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं सो देन डायरेक्टली यू कैन गो टू द पीएचडी। ये बात इस डॉक्यूमेंट के बेस पे अभी मैं नहीं कह सकता हूँ। ये आपने भी शायद एक प्रश्न उठाया था कि आप डायरेक्ट पीजी में जा सकते हैं। जी सर। तो ये डॉक्यूमेंट अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। नहीं, काफी हद तक जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं ग्रेजुएशन को और पोस्ट ग्रेजुएशन को लेके, वो सर आपने काफी हद तक क्लियर कर ही दिए। एक इसी का जो डॉक्यूमेंट का डिटेल पार्ट है वो भी मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो एक प्रश्न का उत्तर और है वो शायद हमें यहाँ पर मिल जाए। आपने एक्चुअली में अपने दोनों प्रश्नों के उत्तर पहले ही प्रश्न में दे दिए सर। 2 क्वेश्चन मुझे पूछने थे आपसे, लेकिन आपने इतना डिटेल बता दिया कि दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए मेरे। एक अब बात है कि अटेंडेंस और रेगुलरिटी और एटसेट्रा, तो वो तो आपके हाथ में है, और चूंकि हम समाज के अनुसार चलते हैं तो थोड़ा सा समस्या है वहां पर। ये वाला डॉक्यूमेंट उसी डॉक्यूमेंट है जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में जो बात हो रही है,
उसमें ही आप जब जाएंगे और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो पेज नंबर 97, यदि पीडीएफ को पढ़ेंगे तो पेज नंबर 104। यहाँ देखिए सारा इन्होंने दिया हुआ है इसके अंदर, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस बाय यूजीसी एंड एआईसीटी। चूंकि एआईसीटी वोकेशनल पे चलता है तो उन्होंने उसको भी ध्यान में रखा है, यूजीसी सिंपल एकेडमिक में चलता है उसको ध्यान में रखा है इन्होंने। तो दो अलग अलग इन्होंने बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो अंडर ग्रेजुएट करके आप देखते जाएंगे, पीएचडी। अब देखिए पीएचडी के लिए जो सेकंड कॉलम है उसमें एंट्री क्वालिफिकेशन, पीएचडी की एंट्री क्वालिफिकेशन क्या लिखी है, पीजी डिप्लोमा। तो अब यदि आप इस बात को पकड़ेंगे, पीजी डिप्लोमा दैट्स मीन द 4th ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, सो दैट्स मीन यू आर अलाउड टू एंटर इन द पीएचडी प्रोग्राम। यदि आपने ग्रेजुएशन विद रिसर्च किया है, ऑनर्स डिग्री विद रिसर्च की है, तो आपको पीजी डिप्लोमा मिला है तो आप डायरेक्ट पीएचडी में आ सकते हैं। ये लाइन ये कह रही है, इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। और मास्टर्स डिग्री और ए बैचलर्स डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च, ये लिखा हुआ है थर्ड लाइन में, बैचलर्स डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च जी, ये लिखा हुआ है। अब ये अभी सारी चीजें क्या है ना, गाइडलाइंस हैं, अभी रूल रेगुलेशंस में इनको कन्वर्ट होना है, और दैट कन्वर्जन विल बी डन बाय द यूनिवर्सिटीज ओनली। और हम देखते हैं कि यूजीसी इज अगेन द गाइड, दे आर वर्किंग एज अ गाइडलाइन, और इम्प्लीमेंट करना नहीं करना ये बहुत सी बातें कॉलेजेस के या यूनिवर्सिटीज के हाथ में है। और यहाँ भी एक बात पे थोड़ा सा ध्यान दूंगा इसमें कि देन यू विल फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन द गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी लिबर्टी है टिल 2030 और 35, सो आपको भी वेरिएशंस और थोड़ी सी अभी कंफ्यूजन हमें देखने को मिलेंगे। अब आप इंटरेस्टिंगली मैं एक बात ध्यान दूंगा, यहाँ ये कह रहा है डॉक्यूमेंट कि यदि आप 3 साल का ग्रेजुएशन करके जाएंगे देन यू विल गेट द डिग्री ओनली ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन पास, ऑनर्स नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखना जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं सारे आपको 3 साल में जब निकलेंगे तो यू विल फाइंड गेट द डिग्री ऑफ ऑनर्स, जबकि ये डॉक्यूमेंट अभी ऑनर्स देने की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पर कंपटीशन है कि एक यूनिवर्सिटी दे रही तो दूसरी नहीं देगी, तो स्टूडेंट को लगेगा मेरे को कम पढ़ा रहे हैं, ये मेरी डिग्री की वैल्यू कम हो रही है। तो ये वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट इसके बारे में बात कर रहा है कि कैसे कैसे आप किस किस चरण पे जाके आप अपना प्रवेश ले सकते। तो आप क्रेडिट अपने जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन ये है, और जैसा शुरू में जब 2 सालों से बात हो रही है, यदि आप बीच में कहीं पढ़ाई छोड़ते हैं तो अभी भी हैव सम ऑप्शंस कि आप सपोज करिए फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी भी आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं बीच में, लेकिन उसमें एक मिनिमम पीरियड है कि आपको 5 साल के अंदर ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। आप मास्टर्स छोड़ते हैं तो यूजीसी का जो एक नॉर्मल रूल है N+2, कि जितने साल का प्रोग्राम उसमें 2 साल एक्स्ट्रा आप और अभी ले सकते हैं अपने को पढ़ाई पूरी करके उस डिग्री को कंप्लीट करने में। यहाँ पर वेरिएशन बहुत लंबा देने वाले हैं, और वो वेरिएशन क्या देने वाले, सपोज करिए आज आप अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं और आप 10 साल के बाद वापस सिस्टम में आते हैं। अब 10 साल के अंदर तो बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे, हमारे करिकुलम सिलेबस बहुत कुछ रिवाइज हो जाएगा, नए सिलेबस नई चीजें इंक्लूड हो जाएंगी एज पर द टाइम। तो अब क्वेश्चन आएगा तुमने 10 साल पहले जो पढ़ाई की थी वो तो बहुत कुछ बातें पुरानी हो गई, अब तो नया आ गया है। तो उस कंफ्यूजन को शायद दूर करने के लिए दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रेडिट, कि इतने क्रेडिट्स आपने ऑलरेडी अर्न किए हुए हैं, नाउ अब आप नए सिस्टम के अकॉर्डिंग इतने क्रेडिट और अर्न करिए और अपनी डिग्री को आप पूरा कर लीजिए। तो ये एक सिस्टम यहाँ पर लाने की कोशिश हो रही, तो दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन द क्रेडिट। तो यहाँ पर मार्क्स और डिविजन्स वो तो अलग है, लेकिन मेजर चलेगा कितने क्रेडिट आप अर्न कर चुके हैं और कितने क्रेडिट अभी आपको अर्न करने की जरूरत है, तो देन आपकी डिग्री का पार्ट पूरा हो जाएगा। ओके सर, जी थैंक यू सर। बाकी इसको थोड़ा और डिटेल में, क्योंकि इसको हमारी क्लास नहीं थी इसलिए इसे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं इसमें बताऊंगा। जी जी, इसको डॉक्यूमेंट को हम शेयर कर देंगे और देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो इससे हमें आइडिया मिल जाता। और थैंक्स टू व्हाट्सएप ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स हैं तो लोगों ने शेयर किया था, तो इसको देखेंगे तो आपको पिक्चर बहुत कुछ क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि काफी हद तक मैसेजेस को देख के भी पता लग रहा है कि ये वाला जो एक क्वेश्चन था ये पार्टिसिपेंट्स को क्लियर है।
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जुगनू खट्टर भाटिया मैम से। उनके क्वेश्चन से पहले भी मैं न्यूज़पेपर में 24 मार्च का न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसमें कुछ डिजिटल स्किल्स को लेकर डेटा था कि मोस्ट यंग इंडियंस कैन नॉट सेंड एन ईमेल विद एन अटैचमेंट। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का था, और उसमें कुछ और चीजें थी, जैसे 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जो किसी सिंपल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते अपने सिस्टम पर। 10 में से 1 इंसान ऐसा है जो ठीक से प्रेजेंटेशन बना सकता है अगर कहीं पर प्रेजेंटेशन देनी हो। ये हकीकत है डिजिटल स्किल्स की। अब क्वेश्चन मेरा ये है जुगनू खट्टर भाटिया मैम से कि नाउ फोकस इज ऑन डिजिटल एजुकेशन एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, हाउ द रोल ऑफ ए टीचर विल बी चेंज्ड। क्योंकि टीचर्स इन्हीं यंग लोगों में से आ रहे हैं जो मैंने भी आपको बताया, हार्डली मेल विद अटैचमेंट करना नहीं आता, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना नहीं आता, प्रेजेंटेशंस 10% लोगों को आती है। तो इतनी बड़ी जंग को कैसे जीतेंगे? डिजिटल डिवाइड का जो रिस्क है वो एक्सट्रीम पे बढ़ता जा रहा है, खासकर इंडिया में। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी की बात होने लगी है, तो ये जो चेंज है और स्पीड से होगा, तो किस तरह से टीचर्स का रोल चेंज होगा इसमें? डॉक्टर जुगनू खट्टर भाटिया मैम। First of all, good morning to all of you, and heartily congratulations to School of Education, G.D. Goenka University, for organizing this panel discussion and giving me an opportunity. So the question है आपका कि role of teacher. तो सर हम यहीं से लेना चाहेंगे role. When we talk about the role, हम हमेशा से ये कहते हैं that teacher should be a role model for our students. जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमें रोल मॉडल बनना है। तो अब ये जो हमारी जो जनरेशन है, टुडेज जनरेशन है, तो ये डिजिटल जनरेशन, बट यस जैसे कि आपने कहा कि ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो सर्वे भी हुआ है या हम यूजुअली अपने क्लासरूम्स में भी देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो है अगर उन्हें एक ईमेल भेजनी है तो वो ईमेल अटैचमेंट नहीं भेज पा रहे, या सब्जेक्ट लाइन में सब्जेक्ट ही मेंशन नहीं कर पा रहे, कई बार वो मींस एक प्रॉपर ईमेल नहीं भेज पा रहे। अगर उन्हें एक ऐप कहा जाए डाउनलोड करने के लिए फोन में, तो उसके लिए भी उनकी इंक्वायरीज आती हैं कि प्लीज आप इनके स्टेप्स बताइए कि क्या स्टेप होंगे एक ऐप को डाउनलोड करने के लिए। या अगर एक उन्हें गूगल फॉर्म का लिंक भी शेयर किया जाए तो वो पूछते हैं कि क्या स्टेप्स होंगे, प्लीज आप स्टेप्स क्लैरिफाई कीजिए। तो सबसे पहले हम, क्योंकि यहाँ टीचर्स की ही बात करेंगे, तो हम कह रहे हैं कि टीचर्स सबसे पहले तो वी आर एक्सपेक्टेड दैट टीचर्स शुड बिकम दैट टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड, बिकॉज हम इस चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अभी तक जो हम डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, तो वो डिजिटल लिटरेसी जो है वो अभी तक टीचर्स में भी कहीं ना कहीं कम है। तो सबसे पहले जरूरत है टेक्नो सेवी टीचर्स की, बिकॉज पहले हम यूजुअली हम टीचर्स के लिए बात करते हैं ना, टीचर शुड बी ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट, कंटेंट एक्सपर्ट, बट इतना होना इज नॉट इनफ। You know how to transfer your knowledge, transfer your information and experience in a different way, and especially in this digital era, right? So हम लोग यहाँ पर continuous professional development teachers की बात भी करते हैं कि उन्हें self improve करना चाहिए, उन्हें should learn the latest innovation and advances करने चाहिए, because again हम कुछ भी बात करें, किसी भी scenario की बात करें, teacher is always responsible for their teaching as well as for students learning, because nowadays students are surrounded with a lot of information, means sources of information बहुत सारे हैं as a learner, because बहुत सारी digital windows हैं जहां से उन्हें information मिल रही है। So teacher का role यहाँ पे क्या है? Teachers are required to be the facilitator and help the learners to make judgment about the quality and the validity of this new sources of information, because no doubt internet is the storehouse of tons of information, but at the same time it is the source of evil influences and corrupt practices. So there is a need of evidence-based teaching and learning. Again, this is very much true that the
आजकल की जो डिजिटल जनरेशन है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका जो वे ऑफ लाइफ है, दैट इज द कट एंड पेस्ट. Whether in we talk about the preschools, जहां पर हम as a parents भी sometimes we are cutting and pasting the information, और हम हायर एजुकेशन की बात करें, राइट. तो बात आती है कि साथ ही साथ बात आती है कि जब हम डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं तो हम इस चीज को, जो बेसिक हमारे पॉइंट्स हैं, उनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. मीन्स अगेन we have to cater for the specific needs of the individual students in our heterogeneous classes. In the digital era, we also have to create a student-centered learning environment. इस student-centered learning environment की बात हम कब से कर रहे हैं, right? वो बात आज से नहीं हो रही है, वो NEP 2020 सिर्फ नहीं कह रहा है, वो हम बहुत पहले से ही कह रहे हैं कि स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए, स्टूडेंट फोकस होना चाहिए. हम लोग एक्सीलेंस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द अपॉर्चुनिटीज. तो सबसे पहले यहाँ पर जरूरत है टू ट्रांजिशन की, टीचर्स के ट्रांजिशन की, बिकॉज टीचर्स जो है दे आर नॉट नो लॉन्गर द कीपर्स एंड द कन्वेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दे आर द डिजाइनर्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस. Content knowledge is not sufficient only. We have to design, means how to communicate with the students in this digital era. मैंने कहा था कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात भी कर रहे हैं, हम लोग चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं. अभी लास्टली हम लोग देख रहे थे कि चैट जीपीटी का आया था कि चैट जीपीटी यूपीएससी के एग्जाम में फेल हो गया. अब एक तरफ हम कह रहे थे कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, इस वक्त का बहुत सारा जो हमारे यंग जनरेशन है वो लोग चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं. अब अगर हम चैट जीपीटी में भी कहें कि वो यूपीएससी के एग्जाम में फेल हो गया, तो क्या वो रिलायबल सोर्सेस है? तो ये बहुत जरूरी है कि जो टीचिंग एंड लर्निंग है वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट्स ऑलरेडी सराउंडेड है लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ. अब देखिए एनईपी का जो विजन की हम बात करते हैं, तो एनईपी का विजन है टू ट्रांसफॉर्म एंड डिजिटलाइज द कंट्री एजुकेशन सिस्टम. नॉट ओनली सिर्फ डिजिटलाइज करना नहीं है, बट टू यूनिवर्सलाइज द पेडागोगी फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल टू द हायर एजुकेशन, राइट. सो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो आप टीचर के अंदर की जो हमारी स्किल्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर को कॉन्सेंट्रेट करना होगा. बीइंग ए टीचर, रोल ऑफ टीचर, आपको अपने अंदर बीइंग ए टीचर यू हैव टू इम्बाइब द डिजिटल स्किल्स. कौन से डिजिटल स्किल्स? हम लोग यूट्यूब की बात करते हैं, बहुत कॉमन है यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जहां पर स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, कहा जाता है. खैर नॉलेज का तो पता नहीं, बट इंफॉर्मेशन जरूर मिल रही है वहां पर. तो चलिए अगर हम उसी तरफ जाते हैं, यूट्यूब की तरफ, कंटेंट क्रिएटर की तरफ, बीइंग ए टीचर हम लोग कंटेंट को क्रिएट भी करते हैं. तो यही कंटेंट हमारे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए. बीइंग ए टीचर, द टीचर शुड बी एबल टू क्रिएट अ एंगेजिंग विजुअल्स, टू क्रिएट द वीडियो कंटेंट, टू क्रिएट द डिजिटल ऑडियो कंटेंट, टू क्रिएट और एस्टैब्लिश अ ब्लॉग और विकिपीडियाज, राइट. तो टीचर्स अगेन यहाँ पर हम लोग अब बात करेंगे, यूट्यूब की बात कर रहे हैं, हम लोग डिजिटल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग नेग्लेक्ट, ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पर जो है अपने ट्रेडिशनल मेथड्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं. हम लोग स्टोरी टेलिंग अप्रोच हमारे टीचिंग लर्निंग में बहुत इफेक्टिवली यूज होती है, बहुत इफेक्टिवली हम सब यूज करते हैं. प्री एजुकेशन में यूज करते हैं, इवन इन द हायर एजुकेशन हम अपने क्लासेस में बहुत यूज करते हैं. सो द चेंज क्या आना है? स्टोरी टेलिंग को हटाना नहीं है, स्टोरी टेलिंग को लेकर आना है इन द डिजिटल. सो डिजिटल स्टोरी टेलिंग टेक्निक को यूज करना है. तो रोल ऑफ टीचर क्या चेंज हो रहा है? वही आप टेक्निक वही यूज कर रहे हैं, आप अप्रोच वही यूज कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग की, बट हो क्या रहा है, अब आप कर रहे हैं डिजिटल स्टोरी टेलिंग. गेम्स, गेमिफिकेशन बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा इसके बारे में कहा जा रहा है.
Yes, it is again helpful for the students. But again, अगर हमें gamification या game based learning, teaching learning class में apply करनी है, then सबसे पहले you have to, being a teacher should learn this gamification technique, game based learning techniques, because this game based learning engage and empower the students to build skills in the various areas such as problem solving. We can't neglect the importance of game based learning because it helps in the problem solving, it helps in the decision making activities, it directs the students learning, it helps in develop the creativity, right? Social networking sites, हमारी जितनी भी social networking sites हैं, again they are very helpful. The thing is that you have to use it very carefully, right? Because teacher can also harness the power of the social networking to enhance the learning and to keep their students learn how to use it appropriately. This is very much important, right? At the same time, जैसे हमने कहा कि internet जो है, it is a storehouse of knowledge, and at the same time, it is engaged in the corrupt practices. So social networking site, whether it is Facebook, LinkedIn, or any other, we can do various courses through the LinkedIn, but the need is the proper guidance. और ये guidance कौन देगा? It is the responsibility of the teachers. कि हमें students को guide करना है. We have to guide, we have to facilitate. कि आपको social networking sites पर भी किस तरह से work करना है. हम कहते हैं कि open-minded about to adapt these technologies, to adapt the plus point, to adapt the positive sides of this social networking sites. Same way, students को एक critical independent professional में develop करना है, खुद भी active cooperator बनना है, at the same time हमें help करना है students को to be the active collaborator. सिर्फ cutting and pasting से नहीं हमें students को आगे लेके जाना है, हमें students को लेकर जाना है to create the content. अब इंटरनेट में अगर हम देखें तो बहुत सारी टीचिंग रिसोर्सेज अवेलेबल है, राइट? CTPD के अंदर ही हम लोग डिजिटल स्किल्स पे जो हम लोग करते हैं, तो उसमें क्या है, वी आर लर्निंग कि जो भी आपके, हम Pinterest की बात करें, scoop.it की बात करें, डिलीशियस की बात करें, तो आपको ये देखना है कि you have to you will be able to use this social sites to collaborate resources, teaching resources. आपको अपने अंदर एबिलिटी करनी है. Being a teacher should be able to search the web in an effective and efficient manner. जो हम ये डिजिटल इंडियन कैंपेन की बात करते हैं, it will transform the entire nation into a digitally empowered society and the knowledge economy, right? So how it will be possible? It will be possible through the teachers, through the professional development of teacher. हम जब प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें ये स्किल्स पे आ रहे हैं. सो द टीचर्स हैव टू मैनेज द टेक्नोलॉजी एंड द फैसिलिटीज available, which is free of cost available for the effective teaching. Teachers can use the virtual labs as a learning resources, which is available on the NPTEL, means National Program on Technology Enhanced Learning. So we have to use this available resources in an efficient and effective manner, right? So with this, I rest my words. Hello, sir, you are not audible. थैंक यू सो मच जुगनू मैम. आपने डिजिटल लिटरेसी की बात की, डिजिटल रोल की बात की, उसके बाद गेमिफिकेशन, स्टोरी टेलिंग, डिजिटली, सोशल नेटवर्किंग, इन सारी चीजों से पहले जो मैंने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि स्पेसिफिकली अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो एक जो बेसिक डिजिटल ट्रेनिंग है वो सभी टीचर्स को इमीडिएटली देनी होगी, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी और गवर्नमेंट के लेवल पे भी, जिसपे कि काम मुझे कहीं होता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है. जैसे डॉक्यूमेंट्स में या
आप गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स उठाएंगे तो काफी सारी चीजें हैं, कुछ हो भी रही हैं, लेकिन जो जिस स्पीड से, जैसे कहते हैं ना, कोविड के टाइम पर वैक्सीनेशन हुआ था, डिजिटल स्किल्स को लेके वैसी ही मिशन की जरूरत है, अदरवाइज फिर एक बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है उस तरह की चीज में। मैं आगे रिक्वेस्ट करूंगा प्रवेश मैम से कि एक क्वेश्चन और लेकर पैनल वाला, उसके बाद क्योंकि काफी डिमांड है आज ऑडियंस की भी कि वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो 4-5 क्वेश्चंस फिर आप वहां से ले लीजिएगा। Okay, sir. ओवर टू प्रवेश मैम। Yes, sir. Thank you so much. Thank you, Jugnu ma'am. So, आगे इसी सेशन में अगर आगे जाते हैं तो मैं आपसे तान्या मैम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स को लेकर के कुछ जानना चाहूंगी। हमारी ऑडियंस के भी सवाल हैं कि वी ऑल ऑफ अस नो दैट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इज a resourceful cornerstone of the multiple entry exit system, which is promoting flexibility in the curriculum and institution, and it ensure mobility of learners across the higher education institution of their choice. And बच्चों के पास भी ऑप्शन है कि to gain the credits by learning quality MOOCs from UGC approved digital platform like SWAM. And this national level credit account that will facilitate the digital storage of earned credits from different higher education institution, and the certificate, diploma, degrees that also will be awarded in line with the accumulated credit in a specific duration at undergraduate level and master level. So the higher education institution that will be required to that register in the national ABC framework for the successful implementation of this multiple entry exit system and smooth execution of this multidisciplinary and flexible learning. So मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ that what are the modification required to better equip the academic bank of credit to support multidisciplinary education? Yes, Tanya ma'am. So, ma'am, if I just try to sum up from what all the panelists have said, see, Dr. Anita ji, she talked about diversity, and Professor Satendra sir has, in fact, explained and shown the restructuring of the entire education system from school to doctoral level through the NCRF, which is the National Credit Framework report, as sir has mentioned, on 10th of April. This has been released as a report of the High Power Committee. इसमें बहुत सारे लोग हैं जो NIOS के, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के, NCERT से, CIET से, DGET से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, तो बहुत लोगों ने इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए एक ये रिपोर्ट जारी करी है. So sir has explained that, and Dr. Jugnu has mentioned about the role of teachers, how digitalization can really take place, and Dr. Sanjay has mentioned about the realities, the ground realities as well. So if I try to summate the whole thing, is that जब हम बात कर रहे हैं इंक्लूजन की, हम बात कर रहे हैं, और हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, और हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो और एक होलिस्टिक एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज एस्पेक्ट्स, ये वर्ड्स ऑपरेशनलाइज, क्योंकि जब ये पॉलिसी 2020 में आई थी तो दिस वाज अ वेरी आई वुड से एम्बिशियस पॉलिसी, वेरी एम्बिशियस पॉलिसी की भारतीयता भी लेके आएंगे, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स भी आएगा, योगा भी आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आएगी, डिजिटलाइज, मतलब इट वाज अ हाईली एम्बिशियस पॉलिसी. And somewhere in this policy, Dr. Anita ji has tried to mention this also, that the government has not kept in pace with the financing of education, because the 6% GDP which has been proposed in the Kothari Commission report of 1964-66, I do not know why that. Is there a lack of political will, or what is it that we are not able to expend even 6% of our financial resources on education? What is the reason is not really very known to me. Even this ambitious policy, which is talking of so many changes, nothing happens without money. So how the money is going to flow into the system is something we have to see.
कमिंग टू द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जब हम एक होलिस्टिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर की, तो हमें ये प्रैक्टिकली देखना है कि द एंटायर एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड इज it progresses in a sequence and the child moves smoothly from the school to the higher education system, and therefore this policy talks of creditization of learning. तो क्रेडिट क्या है? क्रेडिट को अगर हम बहुत सिंपल शब्दों में समझें, ये वर्ड हम लोग अपने सिलेबस में भी देखते हैं, 5 क्रेडिट, 4 क्रेडिट, 3 क्रेडिट. सिंपली अगर हम क्रेडिट को समझे तो इट इज बेसिकली हाउ यू आर क्वांटिफाइंग द लर्निंग आउटकम्स. So the academic bank of credits, as madam has also said, it is something like a DigiLocker. All the students will have to have an account. The universities and colleges will have to have an account on the academic bank of credits. This is the second thing, not the first thing. I'll tell you what is the first important thing for implementation. And then, the credit earns, credit redeemed, credit transfer, वो जो सारे इस ABC के अंदर आती है चीजें सब होंगी. और इक्विवेलेंस भी करना, वो भी एक अपने आप में एक चैलेंज है. बट जो आपको सर ने एक स्ट्रक्चर दिखाया, एटलीस्ट उसमें लेवल्स डिसाइड हो गए हैं, दैट देयर आर 8 लेवल्स ऑफ लर्निंग, हाउ द एंटायर लर्निंग विल बी क्रिटिसाइज्ड, whether one is doing general education or one is doing vocational education, or one is trying to move from general to vocational education. तो vocational के प्रति जो एक मानसिकता थी लोगों की, that it's not a good career, वो ये क्रेडिट फ्रेमवर्क ब्रेक करेगा. और मल्टीडिसिप्लिनरी, जहां पे एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट स्टेम के सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है और एक बीटेक का स्टूडेंट एक ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकता है. तो ये सारी चीजें इसके अंदर है. अब तक जो हम देख रहे हैं कि वैल्यू एडेड कोर्सेज, स्पोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, इनके क्रेडिट्स नहीं होते थे, ये अब क्रेडिटाइज होंगे. So everything that the learner is doing is now going to be creditized. Somebody has asked in the chat box about cluster learning also. तो ये भी क्रेडिट फ्रेमवर्क का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो बच्चे किसी भी फॉर्मल सिस्टम में शायद नहीं जा पाए, या उनकी होम बेस्ड लर्निंग थी, या फैमिली से कोई उनकी लर्निंग हुई, वो भी प्रायर लर्निंग अब क्रेडिटाइज होगी. सो इट इज अ शिफ्ट, and we have to understand this document very much. Now the first thing which I was saying is very important is कि कोई भी क्रेडिट स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाए, वो तब तक यूज का नहीं है जब तक आप उसको यूज करना नहीं जानते. So the first thing what is important is that all of us as teaching community understand the spirit of this national credit framework, ensure that we and our students are registered on the ABC. And this year, all the universities, someone else has asked, कि क्या ये operationalized है? Yes, there are a lot of universities which have already operationalized these 4-year research programs. So they are in process, right? So what we need to do is, in short, if I just cut it short and conclude, is that पहले इस credit framework को हम अच्छे से समझें. जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा इस समय खासतौर से यूनिवर्सिटीज में जो इस समय पे करिकुलम है, वी नीड पीपल हु कैन चेंज एंड रीस्ट्रक्चर देयर स्कीम ऑफ स्टडीज, so that the child has a 1-year certificate, 2-year diploma, 3-year graduation, and 4-year graduation of research. This is a massive exercise and not everyone's cup of tea. So this requires a lot of effort. जो आप बात कर रहे थे डॉक्टर जुगनू, वो डिजिटलाइजेशन, ये तो बहुत दूर की बात है. मुझे लगता है कि टीचर्स को अपना बेसिक अपने बारे में भी कुछ लिखना नहीं आता. दैट इज द ग्राउंड रियलिटी. So we have to get into our responsibilities and take this as a challenge for the overall welfare of our students. How far this is going to be successful, this model, whether students will opt for 1 year, 2 year, 3 year, too early to say. It may not be a new model altogether. Sometimes I wonder कि ये क्या सही में एक नया मॉडल है या नहीं है, ये टाइम ही बताएगा.
So yes, so ABC needs time to be implemented. But the first thing, Dr. Parvesh, is we have to understand the credit framework, and we have to read. Everybody who's in the teaching community should read this, this report of the High Power Committee, which has come on the NCR. So this is how we have to implement. Yeah. Thank you. Yes, thank you, Professor Tanya, for giving clear views regarding the academic bank of credits. And now we are having many questions in chat box. So I would like that audience, if you want to ask question, then please raise your hand. और जो संजय आज का जो डिस्कशन है उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस ही हों, इधर उधर के क्वेश्चन को कोशिश करें. जिसको भी क्वेश्चन पूछना है, आप रेज योर हैंड्स. परवेश मैम, आप अपना ना ऑडियो रेखा कुश, ओके ओके ओके, क्योंकि आपके उससे ना वो नॉइज आ रही है. यस, रेखा कौशल. Yes, good morning. Good morning to all of you present here and the panelists. A very good morning to all of you. My question is that when we are going to talk about multidisciplinary course and we are going to divide this course into some majors and minors, I have written this question in the chat box as well. रेखा, आप अपना वीडियो ऑन करेंगे? वीडियो सर एक्चुअली मेरा वीडियो ऑन हो नहीं पाएगा, मेरे लैपटॉप के कैमरा में कोई प्रॉब्लम है. चलिए ठीक है, बी कंटिन्यू. इसे मैं फिक्स कराऊंगी बस 1-2 दिनों में. बी कंटिन्यू. जी सर. सो पहला क्वेश्चन तो सर मेरा ये है, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज में और मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज में. आई नो ये थोड़ा सा हेयरलाइन डिफरेंस होगा, बट मैं ये डिफरेंस थोड़ा एक्चुअल में समझना चाहती हूँ कि ये इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज में क्या डिफरेंस है. और दूसरा, जब हम स्टूडेंट्स को ये कह रहे हैं कि हम मल्टीपल एग्जिट्स दे रहे हैं फर्स्ट ईयर के बाद, सेकेंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद, वहां पे हम उनको मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि जब वो स्टूडेंट्स जॉब लेने के लिए जाएं तो उनके पास कोई भी स्पेशलाइजेशन ना हो एंड दे एंड अप विद जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन. तो थोड़ा सा ये पर्सपेक्टिव में समझना चाहती हूँ कि मतलब ये कैसे हो पाएगा. ठीक है रेखा, इट्स ओके. पैनलिस्ट में से कौन आंसर करना चाहेगा इसको? I think I can, Rekha ji, we are not going to have any student who is going to be jack of all trades and master of none. The credit framework, when we are making the curriculum, we have to ensure that the student is graduating in some major and has combination of some minors. So it will not be that, we will ultimately have to create a pool. You can't just let everything go haywire. And if I'm having somebody, taking a BSc physics honors with research, then I can offer a minor in some other subject which may be interrelated or closely related. I just can't, give it completely with no relevance. So I think will not really be the case, because अगर आप इसको practically operationalize करने की कोशिश करें, तो you can't have such kind of diversity. This is from my side. Maybe other panelists have some other view on this. नहीं, इसमें ताने में एक चीज ये भी तो हो सकती है, मान लीजिए फिजिक्स या केमिस्ट्री में कोई कर रहा है कुछ भी, अगर उसका म्यूजिक में या डांस में इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड कोर्स है, तो इसका तो कोई रेलिवेंस या वो वैसा देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है वैसे भी. मतलब माइनर्स में the person can have a course done in minor and can pursue a small career in उसका स्पेशलाइजेशन तो फिजिक्स या केमिस्ट्री में ही रहेगा, और एज ए माइनर ये भी सीख सकता है, जैसा कि पहले नहीं होता था, पॉसिबिलिटीज नहीं थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रविंद्रनाथ दास. यस, रविंद्रनाथ जी. Ravindra ji, unmute yourself. Hello. Yes. Good morning, sir. Good morning. Can you open your video? Yes, sir. Actually, let me see. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Sir, you have unmuted my video, sir, so I can't open it, sir. Please. Hello, sir. Yes, now you can open your video. Okay, sir.
Yes, sir, please. Thank you, sir. Sir, at the very outset, I offer my good morning to each and everyone present in this academic session. I am very much lucky to be a participant in this academic session. So, sir, my question is regarding academic bank of credit. There is one question from my side, sir. Whether the private universities that exist in India, will the private universities be inducted into the arena of academic bank of credit as per NEP 2020? Hello. Panelists, please answer the question. Any one of the panelists related to university background? Will you repeat your question? Sir, regarding academic bank of credit, my Regarding question is ABC, yes. whether the private universities that exist in our country, will the private universities be inducted into the arena of academic bank of credit? मतलब आप ये पूछना चाहते हैं कि will be the part of that system or not? Whole Yeah. Sir, whole Okay. education system will be under the ABC. Definitely will be the part of Differentiation the between the system. private and the government. All will come under the ABC system. Yes, sir. Thank you, sir. And the next question is from Dr. Radha Krishnan TT. Unmute yourself. Yes, very good morning, sir. Good morning, all of you. Yeah, good morning, sir. Good morning. Thank you for conducting all this kind of a beautiful discussion. Hello. Yes, sir. Please continue, sir. Okay, sir. Okay. So regarding the multiple entry system and all, nowadays the particularly focusing on teacher education institutions and the quality of education. So available what we can see. Wait a minute, sir. Wait a minute. Just, subject. Yeah. Character of the object. Like character. Yes. Yes, sir. Am I audible, sir? Yes. So regarding quality education and all, nowadays the multiple entry system and all we are focusing on. And majority of the students nowadays in almost all colleges, what we can see, sir, in teacher education institution, Yes. the non-attending practices are going on everywhere. So is there any suggestive measures we can do in that particular field to focus? Sir, the quality education. पैनलिस्ट से तो मैंने पूछा था प्रोफेसर सत्येंद्र गुप्ता से, तो वो तो एक ग्राउंड रियलिटी उसका कोई आंसर नहीं दिया था। सबसे अच्छा है जो नहीं आना चाहते उनके लिए डिस्टेंस का ऑप्शन कर दिया जाए, और क्या करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम है और ये कहीं पर एड्रेस नहीं हो रही है। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ग्राउंड रियलिटीज है, इवन नॉट इन टीचर एजुकेशन, इन इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज टू। Yeah, almost everywhere we can see this kind of practices. Yes. पैनलिस्ट में से कोई देना चाहेगा इसका आंसर, क्योंकि ये नॉन अटेंडिंग पर क्वेश्चन है इनका, और ये मेरे ख्याल से टीचर एजुकेशन में नहीं, सभी कोर्सेज में ऑल ओवर द इंडिया इश्यूज हैं इस पर क्योंकि सभी परेशान है तो आंसर देना भी बड़ा मुश्किल है। प्लीज। What makes a non-attending system, sir? I have a revert question to you. Who makes a non-attending system? We only make it non-attending. No, sir. मतलब ऐसा तो कोई समय होता ही नहीं है कि student doesn't want to come, या तो उसको वहाँ कुछ मिल नहीं रहा है सर, एक तो ये reason होता है, और दूसरा ये कि everything is becoming so grossly commercialized. One way we are talking of access, we are getting highly privatized. So when you are getting highly privatized and you're following a client-centered approach, so you're okay with non-attending. So you do not take any actions on non-attending, and therefore you breed that culture and system of non-attending. That is the current system of education system in our country. I do not know that reputed institutions like IIM or Delhi University colleges like St. Stephen, do they have non-attending? They don't. Why is it only in affiliated colleges? Imagine the entire national education policy when it came in 2020 and during COVID, when I was reading this, I was ashamed to see that the only teacher education is one
one domain, and we talk of teachers as role models, this is the only discipline which has been heavily criticized in NEP as a substandard. Yes, ma'am. That is why I am focusing on for making a discussion regarding that one. We have We are created. talking about quality, equity, accountability, and all these things. And prospective teachers are many a time doing all these things. Do you have quality teachers, sir? First ask this question. Do you have quality teachers? Only Yes, then yes, you will yes. have quality learners, sir. How many teachers want to deliver quality is one question I would like to raise from this platform. Everyone can discuss that. Everyone can think of that one also, ma'am. Thank you very much. सर इसको ऐसे कंक्लूड कर लेते हैं कि मतलब ये जो नॉन अटेंडिंग का सिस्टम है ये डेवलप तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नहीं शुरू किया, इनिशिएट तो उन्होंने लिया, अब वो उसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं अगर देखा जाए तो. I would Yes. like to mention something here. जी, जी, ma'am. Non-attending has become a global problem. I know many students who are studying abroad, who are going in for online education. See, after COVID, we have to cater to both the kind of modes of education, online and offline. I know many students who are studying from India on the online mode in foreign university. So this non-attending problem is a global problem also. So we can adopt both the modes of teaching, online and offline, to solve this problem, this issue. Yes, madam. Of course. Thank you. Let us do it together. प्रवेश मैम, Sir, no question now. You can go ahead. okay, sir. Thank you. Yes, please. I would like to request everyone before giving vote of thanks, please open your camera so that we can take a screenshot. And now after this good discussion, thank you, respected all the panelists for giving your kind insight towards various aspects of implementation of NEP 2020 at higher education level. And our panelists helped us to explore that how NEP 2020 provide a kind of flexibility and power to the students to choose their learning pathways and ultimately support the concept of inclusive education as discussed by Tanya ma'am, and also focus on the fact that how technology will support the educational inclusiveness. And then by Dr. Anita, she discusses diversity in the Indian context, and NEP has revamped all the educational structure, including regulation and governance. And she discussed 5 pillars of NEP and how these promote diversity. Thank you, Dr. Anita. And my wonderful thanks goes to Professor Satyendra sir, and he discussed different documents which are later addendums of NEP 2020, like curriculum and credit framework. आपने बहुत अच्छे से concept को clear किया for undergraduate programs. And NEP is trying bring uniformity in study hours among all university and institutions. And resistance to start something new will always be there. And he went on to discuss different aspects of educational changes, and students have provisions for different types of degrees based on their interests. So NEP is also trying to develop research attitude as discussed by Professor Satyendra Gupta sir, and he discussed a great deal on NEP vision on how to deal with different stages of higher education and what the government envisions students' journey will be. And then again, I would like to thank Dr. Jugnu. Thank you for letting us know the role of teacher. Teacher should not just be a subject specialist, but imbibe the digital technology to transfer the knowledge. So teachers needs to be an successful content creator, active cooperator and collaborator as discussed by you, going beyond copy paste method. A teacher in modern days, teacher needs to use the digital technology in an effective and efficient method. So teachers need to manage the technology and facilities, and teachers should imbibe knowledge through social networking and gamifications and so on. And Dr. Tanya also further gave the details about the academic bank of credit, and she emphasized on the importance of finance in implementing any of the ambitious project
like NEP and teachers that needs to understand the spirit of national credit framework, and that's only that how they can help students to take full advantages of the system. So we feel really joyful to see how enthusiastically all the panelists cleared all the doubts of the participant, and our participants also participated enthusiastically. So I hereby thank Dr. Anita Singh, Professor Satendra Gupta sir, Professor Sanjay Kumar also, President CTPD and Principal Saraswati College of Professional Studies, for adding values to training session and supporting this training program from N. And I feel privileged to thank again Professor Tanya Gupta and Dr. Jugnu Khattar Bhatia ma'am. And last but not least, we would like to express our heartfelt gratitude to our dear participant for being so enthusiastic and patient enough to be with us until the end of the session. And thank you for being here with us. And the last thing that I want to say to all of you, kindly fill out the feedback form so that we can provide you e-certificate, and thank you for your valuable time, and please take care everyone. So my heartfelt thanks goes to again to all the panelists and our participants. Thank you everyone. Yes, please fill the feedback form. The link is given in the chat box. Thank you, ma'am. May I leave the meeting? Yes, sir. Thank you for coming and sparing valuable time on Sunday, especially. It is very difficult to manage on Sunday. And We heard so many thoughts and ideas. Yes, sir. Thank you, But yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Dr. Anita. Thank you, Dr. Jugnu, and thank you, Dr. Tanya, for being with us. Yes, please fill the feedback form. Please don't leave the meeting without filling the feedback form. Dr. Sanjay, should I leave, end the meeting or take some time? Hello, Sanjay sir. You can take 2 to 3 minutes more. Then end the because okay. People need some time to fill the form. Na? Thereafter you can do. And even I'm transferring, I'm making you host. Wait a minute so that you can take the decision. Ravis ma'am, now you are host. Yes, sir. After 2 or 3 minutes, I will end this session. Okay.
So now I'm going to end the meeting, signing off on the behalf of GD Goenka University.